regarding this? If you have any questions, you can ask me now. No. So So last time we have already started with a unit, and that's what? Have. Correct? Last time we have seen the meanings of have in English, when to use and how to use and what to use of have. So we have seen we can use have there for eating, drinking, for having something, for possessions, for doing something, for kind of activities, and for the other things as well. Correct? Now, last time we were having the same expressions with have means ideas with have. Now today we are going to see new sentences with have. For example, I want to learn ski but I don't have the time. Can you please give me some sentences with I don't have the time? I don't have the time. मतलब मेरे पास में time नहीं है. So for this also we are going to use their have. So I want you to make sentences with I don't have the time. Can you please make sentences one by one with I don't have the time? Faster. I don't have patience. I don't have patience. Good. I want you to make sentences with I don't have the time. That's really good. The sentence is really awesome. I don't have patience. I don't have I don't have patience. the time to read books. Karen, I don't have the time to read books. I don't have a Good. time. Yes. I don't have a time. I don't have the playing cricket. to play cricket. Cricket. Play cricket. I don't have the time to play cricket. Next one. I don't have the time to tete-a-tete with you. I don't have the time to have a tete-a-tete with you. Wow. Yes, Pradeep. I don't have time. I don't have time to journey. I don't have the time. I don't have the time for journey. I don't have the time for journey. Next. Shivdas, make sentences. I don't have a time with share you. Not a time. A time लिखा ही नहीं है वहाँ पर. I don't have the time. Continue. I don't have the time to study. I don't have the time to study. Oh, khatarnak. Continue. I don't have the time. I don't have the time for nonsense. I don't have the time for playing cricket. I don't have the time to go to the cinemas. I don't have the time to listen to your fishy things. I don't have the time to listen to your cock and bulls. I don't have the time to owe you. I don't have the time to बकवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? babble. I don't have the time to babble. Babble. I don't have a time. I don't have the time. A time. Time is absolutely uncountable. We can't say I don't a have time. the babble. I don't have the time to babble. Make sentences, please. Chaitanya, madam. I don't have the time. I don't have the time to watch movie. I don't have the time to watch movies. Good. I don't have the time for party. I don't have the time for parties. Good. I don't have the time for attend meeting. I don't have the time to attend meetings. Karthik, I don't have the time. Karthik, see, I renamed your name. आपका नाम मैंने rename किया है. लिस्ट में देखो आपका नाम कैसे लिखा है मैंने. कार्तिक लोंडे. कार्तिक. ई के ऊपर चढ़िया आया एक्सेंट. भारी दिख रहा है ना? करेक्ट है वो. बिना ई acute accent का wrong हो जाएगा वो. Okay, guys, make sentences please faster now. I don't have the time for the. I don't have the time. One by one. My friend. एक के बाद बनाना है. Yes, I don't have the time for haircut. I don't have the time for haircut. I don't have the time to go to the gardens. I don't have the time to meet you. I don't have the time to talk to you much. I don't have the time to listen to you. I don't have the time to go to the mall. To go to the malls. I don't have the time to go to the market. I don't have the time for shopping. I don't have the time for shopping. I don't have the time for picking up your phone. I don't have the time for picking up your phone. Karthik, I don't have the time for her. Pradeep, I don't have time for love. Oh, wow. I don't have the time for love. Chalo. Now, what's the difference between have and have got? Who can tell me? Anyone? Have and have got. What's the difference between have and have got? Many of the time you might have seen people are saying have got, correct? God. What's the difference between have and have got? Who can tell me this one?
Yes, have one. There is Have no got, difference. First of all, there is no difference. Point number one, there is no difference. Have and have got both are the same, but the difference between have and have got is what have is what completely formal, and have got is absolutely informal. Have is formal and have got is informal. Remember this. Have is formal and have got is informal. Point number one, have and have got both are the same. Would like to tell you, like, for example, I have a car, I have a cupboard, this she has a bungalow, I have some tasks, or I have a party. And now have got to be used informally. For example, I've got a car, I've got two siblings, I've got a problem, I've got a solution, I've got. So I have got, short form will become I have got. For example, I have two sisters. I have two sisters. Same sentence, we can say I have got two sisters. No difference. The difference between both of them is what? Have is formal and have got is informal. All right. I have two sisters and I have got two sisters. The short form of I have is here. I've got two sisters. Okay. So now have got and have both are the same. Have got is speaking informal. Have is writing formal. For example, I've got three sisters. Do you have any brothers and sisters, or have you got any brothers and sisters? Okay. I've got three sisters. She's got two sisters, 9 brothers, etc. Can you please talk about your siblings? Jaldi, please talk about your siblings. For example, I've got three sisters. I've got two brothers. I've got 5 sisters. I have got two brothers. I've got 2 brothers. Next, I have got one sister and one brother. I've got a sister and a brother. I've got a sister and a brother. Means what? I have got many friends. I've got many friends. Chalo next, Mr. I have Dalip got one I brother. have got one I have brother. got one sister. I've got a sister. I've got a brother. I have 3 elder brothers. I've got 3 elder brothers. तर आपण दोन्ही सेंटेन्स सर कधी कधी मग म्हणजे एक सेंटेन्स आहे आय हॅव गॉट 50 मार्क्स मग आय हॅव 50 मार्क्स असं नाही ना म्हणू शकत आपण तर बोलू शकतो ना, I have got, I have 50 marks, I've got. See, अब यहाँ पर आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं बहुत सही सेंटेंस बोला है, very nice. Would like to tell you one more thing. As he said that I have got 50 marks, correct? मला 50 मार्क भेटले. I've got 50 marks, correct? And Yeah. I have 50 marks. असं बोलू शकत नाही आपण. Correct. क्यों सर? ऐसे नहीं. क्यों? उसकी वजह है, देखो वहाँ पर अब have अपन किस किस के लिए यूज करते हैं? Now I'm going to tell you the rule. Just pay attention over here. When you can use their have, you can't use their get. And when you have, ये एक रूल है इंग्लिश के अंदर, जहां पे get यूज नहीं हो सकता है वहां पे have यूज होता है, और जहां पे have यूज नहीं हो सकता है वहां पे get यूज होता है. For example, I have a shower. Correct? मैं अंघोळ करता हूँ, मैं नहाता हूँ. I have a shower. Can we say I get a shower? Can we say like No. this? I get a shower. I got आएगा ना सर? I got a shower. I get a shower. I got a shower भी नहीं बोल, वो पास्ट में हो जाएगा. यहाँ पे हाँ. ध्यान दीजिए अब. Next one. I get angry. मैं गुस्सा हो जाता हूँ. I get angry. Correct? हो जाता हूँ. तो यहाँ पे get का मतलब है होना. I get होना. angry. Can we say I have angry? नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा वो. समझा? तो जहाँ पे get यूज करता है कर सकते हैं, वहाँ पे have यूज नहीं कर सकते, और जहाँ पे have यूज करते हैं वहाँ पे get यूज नहीं कर सकते. लिटरली रूल है इंग्लिश का वहाँ पर. Simple rule is there where you can use have, you can't use their get, and when you can use get, you can't use their have. All right. So he is absolutely right. But the certain things, अभी जिसके लिए भी अपन ने have use किया है वहाँ पर हम लोग have got use कर सकते हैं. जो चीज के लिए भी अपन ने have use किया वहाँ पे have got use कर सकते हैं अपन. Okay. For example, I have got 3 sisters. I have got a bungalow. I have got a car. I've got a mobile. I've got breakfast. मुझे मिला है. I Next suppose one. that I have got from. Pardon? I have I've got got- your number from. Correct. I've got Your your number. number. Yeah, I've got your number from Pradeep. We म्हणजे can say सर the yes, yes. हॅवचे हॅव गॉट करू शकतो पण हॅव गॉटचं प्रत्येक वेळेस हॅव होईल असं सांगू शकत नाही ना
नाही 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 have got व्हाईस चा वर्सा have व्हाईस वर्सा होऊ शकत नाही ना त्यामध्ये. एक्झॅक्टली राईट. have चा have got करू शकतो बट have got चा have करू नाही शकत आपण. एक्झॅक्टली सेम केस. My house is big. It's got 5 bedrooms and 3 bathrooms. It has got 5 bedrooms and 3 bathrooms, or it has 5 bedrooms and 3 bathrooms. Both are correct. Now we have got 10 minutes before the train goes. So we have got 10 minutes. आमच्याकडे 10 मिनिटच आहेत. And we have 10 minutes. Both are correct. Okay. So we have got 10 minutes. Now, for example, this is my speaker. This is my speaker. It has got 4 buttons. This is my speaker. It has got a hanger. So IUV they have. He, she, it has. 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 Very good. Has. So it has got will become it's got. It's got. It's got. Okay. We have got 10 minutes before the train goes. We have got. Next one. Have you got a pen? तुमच्याकडे पेन आहे का? Have you got a pen? Have you got a pen? Have you got a pen? तुमच्याकडे पेन आहे का? Have you got a pen? Can you please give me some sentences with have got, have got, have you got, have you got? I have got 5 siblings. Have you got a charger? I've got a charger. I got a new phone. I've got a new phone. Yes. कार्तिक सेंटेंस कुठे आहे आपल्या आज? I've got a new cruiser. Have you I've got a got a laptop? I've got a new laptop. I have got a new home. I've got a new home. Osama, sentences. Karthik, sentences. Sir, I am confused here. I've got a assignment. Why, my dear? Why are you confused? Sir, Can वापस you repeat करो ना, repeat, मैं भी sir? थोड़ा confused हो गया. समझ में नहीं आ रहा है सर ये. Yeah, sir. Okay, just have, आप बोल रहे गॉट लगाना है, कभी फिर बोल रहे है जमनी हो जाती है. have और have got के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है. Correct? मतलब दोनों सेम है. दोनों भी सेम है. दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है. पहली बात तो कुछ भी फर्क नहीं है. सिर्फ फर्क इतना है, have कब यूज करते हैं हम लोग? फॉर्मल के लिए. और have got यूज कब करते हैं? इनफॉर्मल के लिए. मतलब अब फॉर्मल इनफॉर्मल रहता क्या? किसने पहला लेक्चर बैठा था मेरा? मी. सेकंड थर्ड लेक्चर कौन बैठा था मेरा? बैठे रहेंगे आप यस. के अंदर आप लोगों ने देखा रहेगा. कॉन्वर्सेशन फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल यानी बातचीत दोनों आदमी की. इनफॉर्मल बोले तो रिलेटिव्स को वगैरह. करेक्ट, एग्जैक्टली. हाँ. बातचीत फॉर्मल नहीं होता है. फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिस के अंदर. हाँ सॉरी जमनी उल्टा हो गया. और इनफॉर्मल मतलब है नहीं जो अपन फ्रेंड्स के साथ में करते हैं, आजू वाले बाजू वाले के साथ में करते हैं, वो इनफॉर्मल हो गया. अब यहाँ पर उसकी 2 मीनिंग है. फॉर्मल मीन्स व्हाट? रिटन इंग्लिश. उसने उसमें भी लिखा है, देखो. रिटन इंग्लिश खाली अपन जब बाहर जाते हैं तो वहां पे अपन लिख सकते हैं ऐसा. एंड इनफॉर्मल का मतलब उसने लिखा है स्पोकन इंग्लिश. गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल Yes. रिटन इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश. अब यहाँ पे फर्क क्या है दोनों के अंदर? हैव कभी यूज कर सकते हैं हम लोग. नॉर्मली फॉर्मल इंग्लिश के अंदर यूज करेंगे हम लोग हैव. मीनिंग चेंज नहीं होगा, दोनों का सेम मीनिंग है. हैव अपन मीनिंग जहाँ पे चेंज नहीं होगा, सेम मीनिंग रहेगा. अभी तक के हम लोगों ने जो हैव यूज किया है सेम मीनिंग के साथ में यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बंगलो, आई हैव अ कार, आई हैव अ शावर, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव अ मीटिंग, आई हैव लंच, आई हैव अ मैच, आई हैव अ कॉम्पिटिशन, आई हैव अ मीटिंग, एटसेट्रा. सेम केस. उसकी जगह पे अपने को लगाना है गॉट. ऐसा अमेरिकन लोग यूज करते हैं. कैसे? आई हैव गॉट, आई हैव गॉट, शी हैज गॉट, ही हैज गॉट. ओके. सो हैज गॉट जो है, हैव गॉट जो है, वो क्या है? इनफॉर्मल है. वो खाली स्पोकन इंग्लिश के अंदर चलता है. रिटन इंग्लिश में नहीं लिख सकते. रिटन इंग्लिश में जब आपको कभी लिखना है, आप लोगों को लिखने वाली इंग्लिश के अंदर, वहां पे खाली हैव लिखने का, हैव गॉट नहीं लिखना उधर. समझा? समझा? मीनिंग Sir, दोनों का. have got past के लिए भी यूज होता है ना? हाँ, अभी लग रहा है वैसा कि पास्ट के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है खाली पास्ट के लिए. ये मेरे को बात अभी पूछे थे ओसामा ने कि हैव गॉट जो है वो पास्ट के लिए यूज होगा वहां पर. ऐसा जरूरी नहीं है. सर ऐसा जरूरी नहीं है. यहाँ पे ये सिनेरियो के अंदर पास्ट नहीं है, प्रेजेंट ही है वो. यस. सर इनके साथ अपन जब मेल ड्रॉप करते हैं और अगर मेल आईडी अपने को मिला है किसी का, तो अपना आई हैव गॉट योर ईमेल आईडी फ्रॉम दिस. सो आपका रिपीट वंस अगेन. वॉइस जब अपने को जब किसी का मेल आईडी मिलता है सर, हाँ, तो अपन जब उसमें मेल करते तो अपन बोलते हैं उसमें जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपन आई हैव गॉट योर ईमेल आईडी फ्रॉम दिस
तो भी लगा सकते हैं ना सर? हाँ बोल सकते हैं। सी अब आपको एक और चीज है बोलता हूँ मैं। अब वहां पर प्रदीप बोल रहा है अगर आपको किसी का ईमेल आईडी मिला तो आप लोग उसको वहां पे लिखते टाइम पे बोल सकते हैं आई हैव गॉट योर मेल आईडी, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, वहां पे आप लोग बोल सकते हैं। वहां पे गॉट जो है वो वर्ब में नहीं यूज होगा, वो नाउन के जैसा यूज होगा। वो क्यों यूज होगा मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। दूसरी बात, अब आप लोग वहां पे सिंपली बोल सकते हैं आई हैव फाउंड योर एंड आई हैव गॉट योर, मतलब मुझे आपके पास से वहां पे मिला, तो आई हैव गॉट योर मेल आईडी फ्रॉम दैट पर्सन। वो आदमी के पास से मुझे आपका मेल आईडी मिला। तो आप लोग रिटर्न इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्पेशली फर्क सिर्फ इतना है, इसको जो है हैव को ब्रिटिश लोग ज्यादा यूज करते हैं एंड हैव गॉट जो है ये अमेरिकन लोग ज्यादा यूज करते हैं इसको। ओके सर। बाकी ज्यादा उसके अंदर फर्क मेन यही है कि ब्रिटिश लोग हैव यूज करते हैं, अमेरिकन लोग हैव गॉट यूज करते हैं ज्यादातर। हैव गॉट, हैव गॉट, हैव गॉट, हैव गॉट। ओके, बाकी दोनों में फर्क कुछ भी नहीं, दोनों में सेम है, दोनों भी सेम है। आई हैव गॉट, अब फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है आई हैव अ प्रॉब्लम, सेंटेंस है कि नहीं ये बराबर? Yes. Yes. यस सेम उसी का मैं क्या बोलूंगा, आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम। समझा? एक ही यस sentence दोनों तरीके से बोला हूँ। हैव और हैव गॉट में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों भी सेम है। हैव और हैव गॉट, आई हैव गॉट। Can you please give me some sentences like this? I've got, he has got, she has got. I've got I've 10 got- minutes. अभी अपन ने देखो यहाँ पर सेंटेंस बनाया था ऊपर, याद आ रहा है अपने को? Do you have a time? Do you have some time? I have only 5 days. I have 2 days. I have 1 minute to go. I have 5 minutes to go. Only 5 minutes. I have 5 minutes to write an exam. Do you have a moment? सेंटेंस बनाया था मालूम आप लोगों ने? सेम सेंटेंस यहाँ पर आएगा, I have got time. So we have got 10 minutes. सेम सेंटेंस है, have or have got. Continue. I have 3 pens. I have 3 friends, or I have got 3 friends. Next. I have one phone. माय Very फ्रेंड good. Next. आई हैव I गॉट have surprise got anklet from my sister. Very good. Next. We have so many friends. Very good. He has so many friends. I I've have got got a one. documents. I have got a mini chum. Very good. Karthik. I have got no surprise from Mr. Ansar Indraji. Very good. Shivdas. Tanya. I have my own home. I have got a one bike. I've got a bike. Jyotsna ma'am. I have got a new dress. Correct. I have got a new dress. She has got a watch. New She has watch. got a watch. I Very have good. got a old friend. Correct. I've got a Have new you mobile got phone. my laptop? Very good. I've got a new desktop. I've got a new mobile phone. Next. He's I got have a a phone. handshake. Very good. Next. We have got new room. Very good. He has got a photo frame. Very good. Can you He give me some has- sentences like that? It has got, it has got, it has got. For example, this is my speaker. It has got a hanger. It has got 2 speakers. It It has has got got- 5. It has got 3 cameras. It has got 3 cameras. It has dual cameras. It has dual camera. It has the Snapdragon process. It has got 3 speakers. It has Very got it has got a gray color cover. Very good. It has got gray color cover. It has got gray cover. It This has is my room. It has got 2 windows. it has It has got an got infinity new display. Very good. Both of you, your voice is lagging. It has got latest processor. Correct. It has got latest processor. This is my car. It has got special AC. Very good. This is my car. It has got a power steering. It has got good wheels. It has got back seat. It has got gray color. Yes, Miss Tanya. Miss- It has got It has Airbags. got a dual engine power. It has got an hybrid engine. Very good. It has got air conditioner. It has got air conditioner. It has got a petrol system. It has got a latest model. Got petrol system. Yes. It has got an electric system. Good. Sania. Shivdas. It has Pradeep. got a solar system. Good. it has got new dress. It has got a latest spacious version. seats. It has got latest version. Yes.
It has got postcard. Very good. It has got postcards. Okay. It has got blocked. Very good. Now, if you see here, have you got a pen? Can you please give me some sentences, questions like this? Give me some questions like this. Have you got a Got pen? a, Have you got a Have you got a sibling? charger? Have you got a Have charger? you got a number? Have you got a key? Very good. Have you got a key? Have you Have got you an got a umbrella? pen? you Have got you a got- pink slip. Have you got a bike? Have you you got a got a mobile? paper? Have you got a paper? Yes. Have you got a room? You got a Very good. certificate. Have you Have you got got a speaker? Very good. Have you got a new friend? Have you got new? Have you you got got a a new watch? headphone? Have you got a mobile phone? Have you got a mobile phone? Yes. Have you got? Have you got a books? Have you got books? Have you got books? Have you got a Have you dress? got a have you got a laptop? Drink? Yes. Have you got a laptop? You got what you want. Very good. Have you got Have what you you got a want? car? Have you got a Have car? you got a slate? Have you got a slate? All right. If you see here in a shop, do you sell postcards? Yes. But we haven't got any at the moment. We haven't got any at the moment. We haven't got any at the moment. Can you please give me some sentences? We haven't got any at the moment. We haven't got. Can you please give me some sentences with we haven't got? We haven't got a parcel. We haven't got a parcel. We haven't got an order. We haven't got an order. I haven't got. Haven't got a. We Very good. I we have haven't not, got we in have a not we haven't number. we haven't got any. We have Haven't का मतलब होता है नहीं है. Have not. Okay. I haven't got. Yes. Guddu. we haven't Sir. a car. He लगाएगी तो has not आएगा. Yeah. Exactly. He hasn't got. He hasn't got. Correct. I haven't got my engineering degree at the moment. Correct. I haven't got my engineering degree right now. Next. I haven't We got. haven't- I haven't got. He hasn't got it. What I want to say. Correct. He hasn't got what I wanted to say. I haven't Next. got new videos. I haven't I got. haven't Haven't got a She hasn't, hasn't got got- my point. Good. Next. I haven't got She at the hasn't moment got bike. English. Very we good. haven't Next. got a cake for you. Correct. He hasn't got. Next. I haven't got his number. I haven't got a at got the his moment time. Good. Next. He haven't got call me any again. He hasn't- I haven't got enough time to do that task. I haven't got enough time. She hasn't got any key of this room. Very good. Karthik, you're not doing this now. I haven't got an extra time for any classes. I haven't got any extra time for classes. Good. I haven't got time to complete my paper. I haven't got time to complete my paper. I haven't got time for shopping. I haven't Now- got any time for TTD. I haven't got any time for TTT. TTT. Now I've got a TTT. problem. Can I have a word with you? I've got a problem. Can I have a word with you? So I've got a problem. Can I have a word with you? Next one. I've got a cold. I've got a headache. I've got a cold. I've got a headache. Now, can you please tell me how many eggs do we have in the body? A very important Huh? question I'm asking you. How many 20. eggs do we have in the body? Headache. Stomach ache. Stomach ache, Body ache. headache, body ache, Yes. Back ache. Back back ache. ache, leg ache. Who can tell me more? So how many total do we have? Total, how many eggs do we have in the body? Who can tell me? Not more than 20. More than 20. Oh my God. Next, who can tell me next? Anyone else? Sir, I do not understand. What are you telling? How Okay. many eggs do we have in the body? Eggs, dard. Acha.
So we have 365 parts in our body. So Yeah, we can right. say. I'm asking about our English, not about science, my dear. Sir, Now, but I'd like to tell you one more thing, guys. Have a care. See, always remember what is 7 exactly pen is 7. have to believe that. What exactly is real, you have to believe that. Don't make your own assumptions. If you're going to make your own assumptions, you will get betrayed. Always remember this. Now, how and why and where, I'll show you someday. By the way, would like to tell you one more thing. A great thing I want to teach you, but not today. I'll teach you this tomorrow. The person who will be coming first. Now, if you want, I can give you a very great example. If you want so, I will give you a great example of learning. मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाना चाहता हूँ which will change the table of your life. It will turn the table of your life. Remember this. Sir, I आपकी want, जिंदगी sir. मैडम सीखना चाहती हैं. ऐसी जबरदस्त चीज है, आप अगर वो सीख गए ना, it is like $1 billion learning, $1 billion teaching. ऐसी सीख है वो कि $1 billion टीचिंग बोलता हूं मैं उसको. Why? Because वो चीज एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज आप लोग के घर में झगड़े हो रहे हैं. किसी के घर ऐसे है जिसके अंदर झगड़े नहीं हो रहे हैं? प्लीज टेल मी. No, sir. अगर कोई बोल रहा है तो मैं उसको एक ही टाइटल दूंगा, यू आर रोबोट. यू आर नॉट ह्यूमन बींग्स, यू आर रोबोट. सर जहाँ लोग हैं वहाँ झगड़े तो हो गए ही सर. I'll tell you one more thing. ये झगड़े बंद हो सकते हैं. कैसे बंद होंगे? Who can tell me the suggestion? Who can give me the great piece of advice? Who can give me the answer that how can you stop these quarrels? Sir, only you listen, don't talk something. Sir, Right. better understanding, sir, between two person. Very nice. We have to adjust in life, sir. Respect to each other, sir. Very good. Now I'll tell you one more thing, that if you Oh. want to learn something great like this, I'll teach you tomorrow. If you'll be present on time, 6 o'clock tomorrow, you'll learn a very amazing lesson of your life. See, this is not my cup of tea. ये मेरा काम नहीं है. My work is to teach you only English. But I do teach other things as well. Why? Because I feel this is my duty to teach you. I do feel to motivate you. I do feel to encourage you to do something good, something great. This is what I do, that it is my duty. That's why I'm just teaching all these things to you. Otherwise, I don't have any sort of problems with it. Remember this. Now, if you see, every house is fighting with each other. They are quarreling, having great combats at home. Same thing if you see with me. In my life, I don't have fights. I don't have the fights even with my competitors. I'll tell you one more thing. Sir, it must be good fight, sir. No, I'll show you. One of my students was there. He was a third. Like this in my career, about 4 to 5 students are there who inspired by me and leaving their fields started their own teachings. And teaching what? English. One of my students was there. In camp, I have my own classes. So one of my students was there. He learned from my side, from my classes, and he opened his own classes just behind my classes. Nothing happened to me because I do believe in myself. Rather than believing in other selves, I do believe in myself. So the same took me the place that after some months, he shut down the classes. And when his classes were going on, even nothing happened to my class. Why? Because I do believe in my own quality. Same thing. Do not fight with anyone. Be with yourself. I'll show you something tomorrow which will turn the table of your life. Why? Because I'm going to show you what exactly people are doing and what are you doing. I'm going to teach you a topic in future. That's what? Direct indirect speech. In the next month, I'll be teaching you one new topic, and that topic is what? Direct indirect speech. And it is one of the most important topic. Even your teachers are confused how to teach to the students direct indirect speech.
but I'll be teaching you direct indirect speech with easy tips. Okay, so for this you need to have common sense. So tomorrow I'll be showing you exactly my teachings, what exactly I want you to teach to the others as well. All right, so please be sir. ready tomorrow on time. And what I'm going to do, कल एड़े चले नहीं करना, मैं कल एक बंदे को क्लास में लूंगा, ठीक है? पहले एक को लूंगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को. Like this I'm going to take all the students inside. सबको एक साथ में नहीं लूंगा मैं, एक एक करके लूंगा, बिकॉज आप लोग को मुझे कुछ जबरदस्त चीज सिखाना है. ऑलराइट, लेट्स गो. नाउ eggs are there. अब हम लोग बोलेंगे अरे बॉडी में कितना सारे eggs हैं. Now we have only 5 eggs in the body. Remember this. By the name egg, we have only 5 pains in the body. 5 kinds of pain we have in the body. And those are what? Point number 1 is what? Headache. We have, what the hell? Headache. Next we have earache. Next we have toothache. Next we have stomach ache. And we have then backache only. अब अपने यहाँ पे क्या करते हैं लोग? They are giving their some, you know, I have eye ache, I have cheek ache, I have lip ache, I have back ache, I have leg ache, I have hand ache, I have wrist ache, I have finger ache, I have neck ache. ऐसा कुछ रहता ही नहीं इंग्लिश में. Point number 1. People, what are people giving? I don't believe them. So back ache रहता है, stomach ache होता है, tooth ache, ear ache, headache. बाकी eye ache, nose ache, lip ache, chin ache, Adam's apple ache, ये chest ache, ऐसा कुछ रहता नहीं. ऐसा रहता नहीं, वो खाली टाइम पास रहता हूँ. ये लोगों ने अपने घर में बनाए. So how many eggs do we have in the body? रहता है ना, पेन. हाँ, पेन बोल सकते हैं. For example, I've got pain in my hands, I've got pain in my leg, I've got pain in my arm, I've got pain in my throat, I've got sore throat, I've got my nose is paining, I can say my eye is paining, etc. All right, so I've got a cold, I've got a headache. Can you please give me some sentences like this, please? I've got a cold, I've got a headache. I've चक्कर got आने a को leg pain. चक्कर आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? What is चक्कर आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मराठी मध्ये काय बोलतात चक्कर आयला? भोवळ येणे. ओके. खरंच म्हणतात सर. बेहोश नहीं बोल रहा हूँ मैं, चक्कर की बात कर रहा हूँ. चक्कर Dizziness, sir. चक्करच म्हणतात सर. डिझीनेस इंग्लिश मध्ये म्हणतात सर. हाँ, डिजीनेस तो इंग्लिश में होता है. I'm Dizziness. feeling मराठीत dizzy. चक्कर म्हणतात सर मराठीत. Okay, गरगरने पण म्हणतात. okay. चक्रवादल. उसको इंग्लिश में बोलते हैं गिरी. I'm feeling giddy. Dizziness, चक्कर आता. I'm feeling giddy. I'm feeling giddy. अभी अपने यहाँ पे ना लोग ऐसे अभी आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हंसेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ. अपने इधर लोग कुछ ऐसे ना बेचारे वो इतने सेल्फ मतलब डिफिडेंट होते हैं, उन लोगों को खुद के बारे में नहीं पता रहता. आप लोगों ने एक बीमारी सुनी रहेगी, मेरे को एक बीमारी का इलाज आज तक मालूम नहीं पड़ा. कौन सी बीमारी मालूम हो? वैसे तरी होता है. क्या होता क्या मालूम. लोग आते हैं आकर क्या हो रहा है, मेरे को कैसा तो भी हो रहा, क्या हो रहा पता नहीं. क्या होता है कैसा तो भी हो रहा है, मला कसं तरी होतंय. अरे now what do you mean by nausea? I'm feeling nausea. Nausea, sir. Weakness. Like उलटी होणे सर. उल्टी के जैसा होता है. Correct. I'm feeling nausea. Okay, I'm feeling nausea. What else? What do you mean by sprain? I've got a sprain. Sprain. Pain, sir दुखना, sir. लेग ऐसा मुड़ जाता है सर. Correct, correct. Sprain. लचक बोलते हैं आप उसको शायद. लचक. हाँ, येस सर. मुरगाळणे पण म्हणतात सर. Twist. I've got a twist. I've got sprain. Chalo. Can you please give me some sentences like this? She's got cancer. He's got Alzheimer's. I've got She's a leg got pain. Yes. I've got a leg pain. I've got a leg pain. I've got leg pain. He has Okay, got arthritis. He has got arthritis. Good. He has got cardiac arrest. Very good. He's got cardiac arrest. He has got dizziness. मेरा दिल दुख रहा है. गुड्डू. She has got dizziness. She's got dizziness. He has Ishania. got giddy. Yes, sir.
Cat Yes. got typhoid. She's got typhoid. Next, I have got Kiran. nausea. He has got Very. brain tumor. He's got brain tumor. Kiran, Pradeep, Karthik. She's We got have got a scoliosis. COVID-19. Good. Oh my God. Yes. Karthik, say something. I've got Lavaria. She has got cancer. Good. She's got scoliosis. Good. Wow. What is Pradeep. the meaning, sir? Scoliosis? I don't know even the meaning of it. Right. But the sentence was good. Because see, like for example, paresthesia, it is also a disease. Hepatitis B is also a disease. Alzheimer's also disease. Acoustic neuroma also disease. He Okay, has got a paralysis. also disease. Yes. Scoliosis is somewhat like जो रीढ़ की हड्डी रहती है वो थोड़ी सी गिर जाती है मतलब लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ऐसी समथिंग है मेरी कजन सिस्टर को हुआ है तो इसलिए मुझे पता है Oh my God. यस इट्स वेरी डेंजर बट May Allah is everything. आई मीन Degenerative nerve भी ऐसे होता है. ये जो नस होती है वो. Did you know that Stephen Hawking? Yes, sir. Stephen Hawking को हुआ था degenerative nerve. ये जो है ना ये back. Now Okay. अभी जब बात निकला है तो थोड़ा बात आपको चलो बता देता हूँ मैं. How many of you are your parents or you might be facing calcium problem, right? Yes, sir. मैंने आपको कभी बताया था क्या? No, sir. अभी बहुत सारे लोग हैं. देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. ध्यान देना है. ये कौन है? रीढ़ की हड्डी. करेक्ट. ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड. ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है. लाइक दिस. और ये क्या है इसके बीच में? इनको बोलते हैं वर्टिब्रा. क्या बोलते हैं इनको? वर्टिब्रा. ये जो वर्टिब्रास रहते हैं ना, आपको मालूम है काम किससे करते हैं? कैसे काम करते हैं? These are the vertebras till the age of 24 and 25. Till the age of 24, 25, vertebras, they wear and reproduce again. They wear and reproduce again. They wear and reproduce and heal again. Till the age of 25. सुनो रे, यहाँ पे ध्यान दो. पीछे मत ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो. बहुत भारी पते की बात बता रहा हूँ मैं आप लोग को. आप लोग को कभी सीखने को भी मिलेगी नहीं बात चीज़ है. बहुत ही जबरदस्त चीज है ये चीज. आपको कोई भी आके कोई डॉक्टर आपको बोले, डॉक्टर आपको खाली इतना बोलेगा मेरे को पैसे ला के दो और फिर मैं मेरा काम करता. हकीम साहब के पास जाएंगे तो हकीम साहब क्या बोलेंगे? पहले इतने चावल लाओ, इतनी दाल लाओ, ये हल्दी लाओ, मेरे घर का पूरा राशन भरो, बाद में देखेंगे अपन इलाज. गेटिंग इट? सो दिस इज व्हाट नॉनसेंस पीपल आर डूइंग देयर. सॉरी फॉर दिस वन. दिस इज ये आपका बैक है. आपका बैक होता कैसे मालूम है? अभी आप लोग प्रैक्टिकल क्लास में अगर मेरे सामने अगर होते तो मैं आपको बहुत जबरदस्त बताया होता. बट स्टिल आई एम जस्ट शोइंग यू. ये जो आपका बैक है ना, till the age of 25 it wears and reproduce again, wears and reproduce again, wears and reproduce again. घिसता है और बनता है, घिसता है और बनता है, घिसता है और बनता है. आपकी एज 25 तक के ना ये जो वर्टिब्रा है ये घिसता है बनता है, काम करके घिसता है बनता है, घिसता है बनता है, घिसता है बनता है. बट आफ्टर द एज ऑफ 25 बनता नहीं, वो घिसते रहता है. फिर बाद में क्या होता है? मन के में आया गैप, अरे कंबर दुख रही है, अरे कंबर गई रे. करेक्ट. इसका एक इलाज है, मैं आपको बोलता हूँ. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? पीपल आर हैविंग देयर कैल्शियम पिल्स. करेक्ट. कैल्शियम पिल्स is not joke. Why? Because if you are having calcium pills a lot, it will cause you cancer. Why? Because having calcium pills, they are very heavy doses. You can get cancer from calcium pills. Better than that, पहली बात तो ये होए नहीं. इसके लिए करना क्या है? Do you know one more thing? आप लोगों में से जिम कितने लोग जाते हैं? How many of you are going to the gym? Sir, अभी close है. नहीं पर कभी जिंदगी में तो जिम गए होंगे कि? Yes, sir. नहीं सर, मैं एक हफ्ता गया था, रात से गया नहीं. अच्छा. शिवदास अपन Yes, sir. अपन तर बिल्डरच आहे ना.
अभी आप लोग ने देखा रहेगा जब नीचे से वेट लिफ्ट करते ना, वो टाइम पे वो लोग उसको क्या करते हैं, नीज को आपके बेंड करना होता है। आपकी जो नी है ना, नी, वो नी को बेंड करना रहता है। वो ये गॉड ने अगर समझो, अगर ये आपको फिंगर दिया है, अगर ये फिंगर है ना, अपन क्या क्या करते हैं उसको, चैताली, प्रदीप, प्रदीप, खुशाते प्रदीप कसं यूज करतो आपण याला? अगर ये फिंगर अगर ऐसी नहीं होती थी तो बेचारे प्रदीप का काम रुक गया रहता अपना एम्प्रेस गार्डन, है कि नहीं? ये फिंगर को जॉइंट्स क्यों दिया है? काम के लिए दिया है। सेम केस, ये जो नीज है आपके, ये नीज का जॉइंट भी इसके लिए है। व्हेन यू आर लिफ्टिंग समथिंग, जस्ट फोल्ड नीज, आपको आपके फोल्ड नी फोल्ड करने हैं, फिर उसको लेफ्ट वेट को लिफ्ट करना है। करेक्ट? Yes, मैं sir. सही बोल रहा हूँ कि शिवदास? Yes, grip. तो आप लोग डंबल उठाते नीचे से, वो पूरा पाइप उसका, तो आप लोग क्या करते हैं, बैक मारने के लिए उसको फोल्ड करते और फिर उठाते। अगर फोल्ड नहीं करते तो पूरी कमर यहाँ से टूटेगी फिर डायरेक्ट आपका। बैक स्ट्रेट रखना होता है। पूरा इसके ऊपर प्रेशर आता है। रात को सोते हैं तो बोले वो योगा कर रहा हूं, बोले मैं, या ऐसे एड़े गए पूरे स्ट्रेट सोना नहीं। While sleeping, sleep on the right hand side. Why right hand side? नाही, मला तर लेफ्ट हँड साइड वर झोपायचं आहे। क्यों? क्योंकि आपका एम्प्रेस गार्डन फूटने के चांसेस हो सकते हैं। मैं आपके दिल की बात कर रहा हूँ, हार्ट। ओके, इफ यू आर स्लीपिंग on the left hand side, your heart is there under the chest, heart is there and there'll be pressure on your heart। और हो सकता है रात में चाचा सोते सुबह में उठे ही नहीं, धाड़ कर फूट जाएंगे अंदर ही, वो अटैक वगैरह आ सकता है। सो यू हैव टू स्लीप ऑन द right hand side, there is no heart। Okay. And while sleeping, just fold your knees। knees को क्या करने का, खड़ा करके देखो ऐसा स्ट्रेट, स्ट्रेट करने से बैक पे प्रेशर आएगा, उसको फोल्ड करके। आज रात में जब सोएंगे तो प्रैक्टिकल जरूर करना। आपको क्या करना है, साइड में सोना है, वन साइड, और उसको फोल्ड करना है। आपका पूरा बैक रिलीज हो जाता है। पॉइंट नंबर 1। सर दोनों हाथ रखने हैं सर के नीचे कि एक हाथ? नहीं, ये वाला है ना, ये खाली एक हाथ रखने का इधर, ऐसे दोनों नहीं, ओके सर। खाली एक हाथ रखे तो चल जाता है। वो समझना ट्राई। हाँ, ऐसे गुड्डू बिड्डू ऐसा ऐसे उठाने बिठाने को अगर आए तो उसे गचंडी पकड़ खींच सकता है दूसरे हाथ से। नो सर। तर उशी असतं ना. तो अब ये जो था, ये पोस्टर हुआ। सेकंड थिंग, जब कोई चीज आप लोग उठाएंगे ना तो उसको क्या करना है, आपको नी को फोल्ड करना है, फिर आप उसको उठा सकते हैं इजीली। सो आप लोग के बैक पे प्रेशर नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 1। तो इसकी वजह से भी आप लोग छोटे अगर हैं तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। और अगर आपका एज 25 अगर हो चुका है तो ख्याल रखिए आगे उसमें गैप नहीं आना। तो क्या करना है उसके अंदर, आप लोग को ये सब चीजें एक्सरसाइज करना है। दूसरी बात, instead of having calcium pills, you can have their seafood, you can have their Seafood, sir. Fish. why seafood only? Sir, omega fatty acids. Correct, because seafood contains a lot of calcium। उसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। फॉर एग्जाम्पल फिश, नेक्स्ट वन क्रैब। छी, पिल्स उससे बनती है, कैल्शियम पिल्स उससे बनती है। अगर कोई बोल रहा है मी वेजिटेरियन है, वो सबसे बड़ा झुट्टा है दुनिया के अंदर। Why? Sir, I want to tell. Yeah. Sir, for vegetarians, if you drink drumstick soup for 15 days, your calcium level is increased tremendously, sir. But if for calcium, you take tablets that is deposited somewhere in our body, so better to take it by natural way. So for vegetarian, drumstick is very best, sir, for calcium. But does it increase the calcium level that drastically? Yes, sir. For 15 days, if you drink that soup, only salt and jeera, sir. If you and you boil that drumsticks and drink for 15 days continuously. Oh my God! It's Wow. it actually increased, sir, tremendously increased, and you should not take tablets for this because actual calcium is deposited somewhere in our body. Correct. Most of the people, sir, on the ankle, they when morning they सर मी मराठीत सांगते, जेव्हा सकाळी ते उठतात ना सर लोक, हॅलो या हॅलो, तर आपल्या पायाची जी टाच असते ना, बऱ्याच लोकांची टेकत नाही खाली, उठल्या सकाळी,
पण ओके त्यावेळी ओके त्यांचं आहे ना, जर त्यांनी कॅल्शियम टॅबलेट्स अबव्ह 40 वुमन्स पण आता त्या टॅबलेट्स घेतात. पण त्या कंटिन्युअस मॅक्झिमम 1 महिना घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर जर जास्त दिवस घेतले तर टाचेवर तो कॅल्शियम डिपॉझिट होतो आणि मग तिथलं जे आपलं बोन असतं ते थोडंसं इन्क्रीज होतं. ते मोस्ट टाइम्स ते ऑपरेशन करून कट करून काढावं लागतं. पण Oh तरी my पण God. नंतर ते पुन्हा ग्रो होऊ शकतं सर. पण ड्रमस्टिकने खूप जास्त कॅल्शियम लेव्हल वाढते आपली. Oh, wow. So drumsticks for vegetarians. Yes, sir. Wow. Non-vegetarians also, but non-vegetarians takes chickens, eggs, so many Yeah, times. yeah, yeah, exactly, exactly. But even milk have more calcium. Yeah, Yes, milk has more calcium, but generally they don't. That milk doesn't produce that much calcium. Huh? yes, sir. But in Yeah. city, sir, milk is not natural way, na? They make so No, no, many. no. Uh, Nowadays we have milk, completely powdered milk we have, yes, yes, and sir. that No, sir. Urea I is have there also, watched- sir. So Pradeep drumstick is has very nice, sir. Pradeep has original. Yes, 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 sir, yes. I have. Oh wow, Chaitanya also. These are the people who are living in village, and that's why they are enjoying. Yeah, sir. Great people. अरे यार हमारा देखो हमारे. सर या So ना crab सुट्टीला. mushrooms are. हम रोज सर सुबह चलने आते. Oh. अभी यार अभी तुम लोग के लिए नहीं है, अभी क्या बोल सकते हैं. By the way, city people, you should know all these things before. So by the way, madam को please tell her very good, very nice. Very good, very nice. Very good, very Very nice. nice, madam. Thank you, sir. Details about drumstick. And see, she has given a very good idea. If you are vegetarian, then you can go with drumstick soup. Because vegetarian people are the people who are not going to eat fish and all, correct? They're not going to have Yes. mushrooms, they're not going to have crabs, they're not going to have tuna, lobster, prawns and all. So better than that, they can go for drumsticks. Okay? So So this is drumstick what मतलब क्या है सर? ये drumstick को उर्दू में तो क्या बोलते फल्ली हैं? फल्ली बोलते हैं वो शेवगा. शेगट की फल्ली. शेवगा, sir, शेवगा. शेगट की शेवगाचं फल्ली शेंगा. बोलते हैं वही क्या सर? वो शेंगा. लंबी आती है ग्रीन Oh, कलर की. yes, yes, Yeah, sir. वो yeah. लंबी आती है हाँ, green this color right. की वही. उसके वही, अंदर sir. वो बीन्स रहती है Yes, sir, yes, Exactly. sir, वही. और सांबर Ma'am, सांबर के अंदर. दोस्त ma'am, हाँ, हाँ, वही, sir. ओके ओके. दोस्त ma'am, बोलो, बोलो, sir. ते कडून लागते असतं. नाही, कडू नसते ती. Okay, बरोबर. ऍक्च्युली सर जे विलेज मध्ये राहतात ना तर ड्रमस्टिकचे जे सर लीव्स असतात ना कोकण में सर हमारे घर के पीछे झाड़ है सर ये सर ड्रमस्टिक का. सर वो आप उसके लीव भी यूज कर सकते हैं, लिप्स भी यूज कर सकते हैं उसके. अच्छा वो सूप के अंदर. सूप के या फिर थाली पीठ वगैरह जो हम बनाते हैं ना महाराष्ट्रियन, उसके अंदर हाँ. लिप भी डाल सकते हैं. तो लीव्स का सूप बनाते हैं सर. लिप का भी बनाते हैं सर. और एक्चुअली मोरिंगा पाउडर मिलती है रेडीमेड, जिसको अगर वो नहीं मिलता तो वो भी ले सकते हैं. सुबह 1 स्पून वार्म वाटर में ले सकते हैं. मेडिकल में भी मिलती है वो. अच्छा अच्छा. सर मैंने बचपन से बहुत खाई है सर ये चीज. तो आपके बोन स्ट्रांग होंगे सर. Please give your राइस bones. के लिए बहुत अच्छा है ये ड्रमस्टिक. Yes, sir. गब्बर भी मुझे बोल bones दे. चलो. By the way, that's really great. I'm really actually we are coming through these discussions. Why? Because I want you to speak up. That's it. The most important thing is what we are going to share our knowledge as well, and we are going to have some kind of discussions like this. So it will help us to speak English much more better way. All right. So please try to speak up. Some of the people are just sitting quiet. I want you to speak too. And I don't know what's wrong with Hello, Karthik. sir. उडून गेली का ती आपल्याला? Sir, I have facing internet issue. That's why I'm not सर आता काय सांगू सर. audible. Yes, Karthik. सोडून गेली सर ती. He has some problem, I think. नाही सर अरे सोडून नाही, गेली. he is ill. सर टेंशन में है आज के दिन. वो कभी टेंशन से बाहर आना, आपने दोनों को टेंशन में डाल देगा फिर. चलो next. Now, next one we are going to have here, have to. One of the most important topic. Please have a look here, have to. What do we use have to? What do we mean by have to? Yes, who can tell me this one? Who can tell me this one? And see, one of the great thing is what? A good news is for all of you. After 30th of October, the students haven't paid the fee. They won't be able to attend classes, okay? Yeah, after 30th of October, the students haven't cleared the fee.
they won't be able to have it. 38th, that's what, this Friday. Please pay the fee till Friday, else you won't be able to attend classes. Okay? मंडे से फिर आप लोगों का क्लास कहाँ रहेगा? सारसबाग पे. क्यों भाई सारसबाग पे? एंजॉय करेंगे आप लोग वहां पर. दम मारो दम, भूल जाओ गम. चलो. So have to is the modal auxiliary which is used for obligation. Remember this one. First point number 1. Situation. बता रहा हूँ ना मैं भी. Situation, it is what? Obligation. Obligation मतलब यानी फर्ज है, कर्तव्य हमारा. When something is compulsory, we are going to use a have to. ध्यान देना है. When something is compulsory, we are going to use their have to. जब कोई चीज कंपल्सरी होती है हम लोग वहां पर यूज करेंगे have to. Have to का मतलब क्या होता है? करना ही पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे have to. आपको एक करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, I have to study. मुझे स्टडी करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो फेल हो जाऊंगा. सर मस्ट भी लग सकता ना. आई मस्ट भी होता है बट मस्ट अलग चीज है. बट हैव टू सबसे स्ट्रॉन्ग है. हैव टू सबसे स्ट्रॉन्ग है. ओके, सो आपको करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज टू वर्क. लॉ. उसको लॉ मानना ही पड़ेगा, नहीं माना तो उसके साथ में बुरा हो सकता है फिर. सो आई हैव टू स्टडी. मुझे स्टडी करना ही पड़ेगा. मुझे स्टडी करना ही पड़ेगा. हैव टू यूज देयर. So we use have to for obligatory. For example, we use have to when the situation means you must do something or you are obliged to do something. For example, the museum's not free. You have to pay $10 to go in. आपको $10 भरना ही पड़ेगा अंदर जाने के लिए. You have to pay $10 to go in. Next, all students have to do an exam. All the students have to do the exam. हर एक student को exam देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो fail हो जाएगा. Next, I haven't got a car. I have to walk to school every day. मुझे स्कूल को चलते जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. I have to walk to school every day. I don't have any choice. I have to walk to school every day. Getting it? Can you please give me some sentences like this? Have to. For example, मैं सबसे एक sentence. I have to speak in English. Very good boy. अभी ध्यान दीजिए, मैं एकदम बेस्ट सेंटेंस दे रहा हूँ आप लोगों को. You have to pay the fee. अभी सबको समझ में. हाँ अभी समझा. कंपल्सरी है, नहीं पे करेंगे तो क्लास अपना सारसबाग पे. क्यों भाई? वहां पे फिर आप लोगों को एक आधा भीख मांगना पड़ेगा, फिर वहीं पे अपना क्लास हो जाएगा फिर. चलो. What is भीख in English? He has to complete the work today in office. I have to work hard. I have Very to good. practicing at home. मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग अपना हैव टू के ऊपर सेंटेंस बना रहे हैं. ये बात सर आवाज नहीं आई, सुने. रिपीट अगेन. मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज भीख इन इंग्लिश? क्या सर? व्हाट इज भीख इन इंग्लिश? भीख, भिक्षा. Verb, sir. भिक्षा. Yes, ma'am. सब बेग. बैग तो मांगने को बोलते हैं. भीख को क्या बोलेंगे? भीख को भीख देना सर. PTS, sir. आर्म्स प्लीज. याद करो क्योंकि फ्यूचर में काम बीम को आया, इंग्लिश नहीं आई तो एटलीस्ट जब आप लोग इंग्लिश में मांगेंगे तो लोग बोलेंगे इंटरनेशनल भिखारी है तो पैसे दो इसको. सर ये कैसा बोलेंगे पर इंग्लिश में? इंग्लिश में सर सेंटेंस कैसा बोलेंगे सर कि मैं उसको भीख दे रहा हूँ? ओके, फॉर एग्जांपल, आई गिव आर्म्स. हम लोग बोल सकते हैं सर आई गिव आर्म्स टू PTS. या वी कैन से Okay. I give arms to the PTS people, or we can say people ask for arms. The PTS means गरीब, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है ना, ऐसे अरे बेचारा रहेगा, भिखारी रहेगा, बेचारा रहे, उसको बोलते हैं PTS people. Okay, people ask for arms. चलो, make sentences with have to one by one. Let me see that how powerful sentences are you making. Give me some sentences have to. I For have example, my to 100% work performance today. I have to speak in British. I have to speak in British English.
I have to practicing at home. I have to Have to practice go the daily words. in To do office. multiple sessions today. Very good. Yes, Osama. I have to work after my classes. Very good. Miss To do Tania. workout Mr. today. Karthik. I have to work out. Yes. I Have have to to do read daily works work daily. repeated. Good. Yes. Learn Fundamental verbs. I have to work daily. I have to work daily. We have to Give go me some swimming sentences. today. He has to. She has to. I have to work hard for my sustenance. Correct. I have to go there. I have to go there. She has to. He has to. He has Pradeep. to work hard. He has to go college. He has to work. I have to She has to meet go to daily. college. He has to read I a have book. to go. He Jatsna have ma'am. to give a Chaitali ma'am. performance. She has to go hospital today. Has to. Yes. He has She has to go hospital make today. tuition. He has to go to hospital today. Very good. He has to give performance on a daily basis to increase her Correct. level. Correct. Yes. She has to work hard. Pradeep. He has She to go has to gym. to done I have homework got daily. He has to go to gym. I have He to do has to go multiple to- chores today. She has to do the multiple chores today. He has He has to to be walk He and has patient to for meet daily. He has joined a class. One by one, one by one. एक एक करके बोलिए प्लीज, ऐसे एक साथ में मत बोलिए. Yes, continue. He has to अभी कोई obey भी- constitution. Very good. He has to join a class. She has to join the class. To complete, Next. I have to complete my homework in this week. He has I to. have to complete my homework in this week. He has Next, to drive. He has to drive a car. he has to drive a car. I have to make Just to timetable live. for better future. I have to make timetable for a better future. You have to pay for what you have taken. Correct. You have to pay for what have you have taken. She has Tanya, to do daily work. Sir, make sentences, madam. Guddu. Yes. I Everyone have to walk have to 5 steps daily to my. She Good. have to do exercise, otherwise her body will faint. She has to. Next. You Everyone have to be have to do the patient task for you have properly. to improve yourself. Everyone has to do the task properly. You Yes. have to improve yourself. Good. Shivdas. You have to work on mail. I have to Very prepare good. for exam. Good. We have to go hand in hand to do a complete process. Correct. Next. They have to make a daily They have daily. to make pizza. We have to give our 100% to improve the situation of the company. You have to extra Very, time in a class. very good. Very good. Next one. Anyone else with go? Have to. She have to make daily routine. We have to make daily routine. We have to go too far from here in order to. We have to go too far from here. I have to improve myself. I have to improve myself. She has Yes. to make a cup of tea. She has to make a cup of tea. She has to make a dinner. He has to make dinner. he has to be brave for facing them. He has to be brave. They have to do today's work. They have to do today's work. We have to be honest in our work. Honest. They have to be honest. All right. Now we are, this tax today. repeat once again. We have to need a It has to be the last day. It has to be the last day. Yes, Pradeep, काय फेकतोय आपण? फेका जरा परत. You have to practice at home. He has to practice at home. You have to practice at home. Sir, have Alright, to की जगह should use कर सकते हैं.
नहीं, actually should, must और have to तीनों अलग अलग है. We use should for advice, we use must for necessity, and we use have to for obligation. Okay, sir. वो मॉडल ऑक्सिलरी है. जब हमारे 6 टेंसेस कंप्लीट होंगे ना, तब मैं आप लोग को एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मॉडल ऑक्सिलरी का. अभी जब हमारे 6 टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग का एक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मॉडल ऑक्सिलरी. तो उसके अंदर मैं आप लोग को सब पढ़ाने वाला हूँ, कब कौन से कहाँ आने वाला है, कब किसको कहाँ यूज करना है, ऑर्डर के लिए क्या यूज करेंगे, एंगर के लिए क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे. ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू ओवर देयर. So must is different, should is different, and have to is different. Yeah, but you can use it. For example, you should go there, you should take an exam, you should perform the task, you should make a schedule. So we You can should say, but learn more. correct. But this should is like normal sentence. Okay. Next one. Now we are going to start a new topic, and that's what go, went, gone. Go is a word. Go, went, gone. Just a minute, please. Huh? So sorry. हाँ. Sorry. So go, went, gone. Now a new chapter is starting with us, and that's what go, went, gone. When do we use go? What do you mean by go? जाने. Move Correct. from one जाने place के to लिए use होता है. another. बहुत सिंपल सी चीज है. But now today I'm going to show you when we can use their go. The word go, when can we use it, and how many usages do we have, and how can we use it? For example, go, went, gone. Go उसका past form है went, and third form है उसका gone. All right. Go means to move from one place to another. One place to another. Go means to move from one place to another. Jana. For example, I go to work by bike. My brother goes by car. Please ध्यान दीजिए. I go to work by bike. My brother goes by car. Why there is goes? Past में. Simple present tense. अरे past में कौन बोला ये? अरे यो. Simple present tense. Correct. Simple present tense है वो. पास्ट में नहीं है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ध्यान दीजिए, इसके लिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिए घर पर, बहुत ज्यादा जरूरत है. Wednesday we are going to make our daily routine in simple present tense. So please don't be absent. If you'll be absent, you'll be responsible for yourself. Now, go, went, gone. I go to work by bike. My brother goes by car. I go to work by bike. My brother goes by car. If you see, I go, I, you, we, they, verb plus no s, no es. So I go. And he, she, it. He, she, it. Goes. He goes. Yes. Plus yes. He, she. Yes. Plus Okay. S or ES. For example, I go to work and my brother goes to work. So I go to work by bike, my brother goes by car. So he, she, it, verb plus S or ES. अब brother कौन है? She, right? He is. He is a जागे जागे. हाँ नहीं जागे जागे. मेरे को लगा अभी आधे लोग सो रहे होंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ. So brother is he. So I can say there my brother goes by car. Okay. Next one. Can you please give me some sentences with go? Simple sentence चाहिए मुझे. Go. I go to work I go, he by goes, she car. goes, it goes. I go to college. I go to play. Yes, Osama. I go I to go to gym shopping. by I go to the bicycle. Yes, I go to Pradeep. I work go to shop. I go to work. by walk. Pradeep. I go to city. I go to market by bus. The market. Yes. I go to play cricket. I go to take my tiffin by walking. Very good. Very good. Give me sentences. Go. I go to the park. temple. I go to I the go to the temple. I go to the park.
I go to the swimming. I go swimming. I go to Mumbai by train. I go to Mumbai by train. Yes. I go to the airport. I go to I go to the airport. Urli Kanchan by walking. I go to Urli Kanchan by walk. I I go Next. to Saraswat. I go to Sarasbag. I go Next. to my home. I go to my home. I go to my classes. I go to my house. I go home. Miss Sania, make sentences. Go, goes. I go to my friend's Madam, make wedding. sentences. Yes. He goes to Jyotsna ma'am. I go to school by bus and my sister goes by walk. Right. Okay. Next one. We went to Paris last summer. We went to Paris last summer. What do you mean by we went to Paris? Past tense. हम पेरिस गए थे. We went to आम्ही Paris. पॅरिसला गर्मी गेलो में. होतो. Correct. Past tense. आम्ही पॅरिसला गेलो होतो. We went to Paris last summer. हम लोग गए थे. Past tense. Can you please give me sentences with went? We went to last. I went to Dubai last winter. We went to Dubai. I We went- went to college. We went to last Mumbai year. last summer. We went to Mumbai. I went to college. I went to the market. Yes. I went to my hometown last rainy I season. went to my hometown. Went to Goa last summer. Very good. Very good. बहुत We खतरनाक बच्चा went है. to temple last year. We went to the temple last year. Guddu? Yes, sir. मुझे Yes, sir. Yes, sir. अरे make sentences बोले yes, sir. अरे make Yes, sentences sir. Yes, sir. जल्दी. Karthik? We went to Mahabaleshwar last summer. We went to Mahabaleshwar last summer. Next. We went to water park last year. Correct. We went to the swimming last summer. We No, went my to dears. Alibag last Diwali vacation. We went to I went. correct. I went to Madina Hotel last Yes, sir. day. Went Aha. go my native place Can't say last month. Sorry, sir, your voice Correct. is lagging. Can you repeat? Sir, your voice is I lagging. said Guddu's statement was wrong Hello. because he said hello. Are you listening me? Yes, yes, sir. Sir, your voice is I lagging. said Guddu's sentence was incorrect because he said that I went to swimming. Correct? Swim. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The sentence is wrong because swimming is not a place. अपन ऐसे बोल सकते हैं कि I went to walking. I went to No. drinking. Sir, swimming pool, sir. Swimming pool. हाँ पूरा बोलने का फिर तो. Okay, can you I make went to sentences? I went to my hometown last week. I went. I I went to I the went swimming to pool my last hometown. summer. I went to King I went to Hotel last week. I went to the pool last week. Very good. Very good. Went. Jyotsna ma'am. So we went to Gujarat last Diwali vacation. Good. We went to Goa in our MBA college. Oh my God. College trip went to Goa. Yes, sir. Oh my God. चांदी चांदी. आपके कॉलेज वाले नहीं अभी आपके कॉलेज अभी प्रदीप के ऐसे हो रहे हैं फिर कॉलेज वाले. हरियाली हरियाली सब तरफ हरियाली. ओ देखो उसको चांदी देखो. चांदी. क्या बात है. प्रदीप आपके कंपनी को आया देखो गुड्डू. हाँ. वेरी नाइस. सही है. तू पण सर तसंच मी आप पण गए तसंच. कभी गोवा को? नहीं बाबा मैं इस जगह पे नहीं आता. सर मेरे को जाने का था मेरे फिर कोरोना के पहले हमारे फ्रेंड लोग का चल गया था फिर कोरोना आ गया. सर अच्छी चीजें भी है सर वहाँ पे. ऐसा कुछ ये नहीं है सर. जा सकते हैं. बहुत अच्छी चीज है सर. सर जाने का तो साउथ गोवा में जाना सर. नॉर्थ गोवा में. मजाक कर रहा हूँ. जाने दो यार. नहीं पर मैं इस जगह पे नहीं जाता हूँ. नहीं सर मैं क्या बोल रहा जाने का तो सर अपन दुबई को जाएंगे. नहीं होता. प्रदीप
वो ओसामा, ये दोनों तीनों जा सकते उधर, इन लोग के पास लाइसेंस भी जा सकते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं सर। ओके, नको बाबा, आम्ही उरुडी कांचनला जाऊ, तिथे नको आपल्याला. सर आ जाओ घर पे आ जाओ मेरे. सर हमारे कोकण भी आ सकते हैं सर, ऑप्शन है सर दूसरा. कोकण में भी बीचेस है सर काफी. सर आमच्या इकडे मंदिर आहे देवाचं या. भुलेश्वर. भुवनेश्वर. वाडेवर नाही सर. भुलेश्वर है ना सर, शिंदौने घाट. हाँ सर. सर आप आएंगे वैसे ना, अपने ऐसे, मैं आपको घाट पे ले जाऊंगा. I'll tell you one more thing guys, बहुत अपने ठंडी इंडिया के ऐसे कंट्री नहीं है. हम्म. आपको मालूम है अपने इंडिया के अंदर जो मजा आता है ना, वो मैंने बाहर कहीं पे भी नहीं देखा. आई वेंट टू जर्मनी, बट वहां पे जाने के बाद में सब अच्छा था, बट फीलिंग वहां पे मजा नहीं आ रहा. हाँ फीलिंग मीन्स व्हाट, आई वेंट देयर. क्या बोले? फील अपने जो इंडिया की फील है ना, फीलिंग वो अलग अलग फीलिंग हुआ. हाँ, मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस बात का हुआ है मालूम है आपको जर्मनी में? क्या सर? कौन सर? खाने का सर, खाने का. आणि उन लोग का ना, अगर आप लोग ब्रेकफास्ट देखेंगे ना, वो फॉरेनर लोग का, अरे बाप रे, उन लोग की जिंदगी बेचारी खाली इतना ही है, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, पैनकेक्स. अपने इधर क्या चलता है? अपने इधर उसड़ मिसड़ रस्से विस्से सांभर, वाह, दाल, हेलो पाव सर, एक भाजी, विचारू का? पाव भाजी. सर ट्रैवल करना है तो पहले पूरा इंडिया घूमना चाहिए, उसके बाद फॉरेन का सोचना चाहिए. नहीं एग्जैक्टली सही बोला आपने. पर मैं हेलो एक बात सर. बोलूं? या मैम बोलिए ना. किती किलो कमी झाले होते? अरे आपको क्या बोलूं मैं, ऐसे ना वहाँ पे मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया था. खाली वो ब्रेकफास्ट अच्छा रहता था उन लोग का, पर डिनर एंड लंच में तो ऐसा दिमाग खराब होता था, बाप रे यार. बिकॉज इन ब्रेकफास्ट ऑल्सो, अभी अपने यहाँ पे क्या पराठे बिराठे चलते ना, उन लोग का ब्रेकफास्ट में क्या चलता है मालूम आपको? दे हैव फ्रूट, मिल्क एंड विनेगर. विनेगर पता है आप लोगों को? विनेगर, यस सर. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. they used to have vinegar on bread and they used to have it. मैं बोलता रर सकर सकर से विनेगर खाता था यार. तो जाओ यार, मैं नहीं खा रहा हूँ. वो देखकर ना मुझे खाने को ही नहीं आता था मालूम. फिर मैं क्या करता था, फ्रूट लेता था टाइम पास के लिए, उतना खाया, मैं बोला चल जान दे, भी हो गया सहारा, जाता हूँ. सर आगे से अपना इंडियन फूड साथ में लेके जाने का थोड़ा. Sir, Sir, but in एक supermarket or groceries, you can find multiple things, sir. हाँ सर. अभी देखो, अभी आप लोग जब पटेल वाली बात कर रहे हैं ना अभी मेरे से, मैं क्या हुआ मालूम आपको? मैं एक बात आता था. मैं वहाँ पे 2.5 महीना था. वो 2.5 महीने के अंदर मैंने एक बार खाना खाया था एक होटल के अंदर. मेरा अकेला का खाना खाने गया था मैं, 5,500 रुपए बिल आया था उधर. My God, sir. उसके बाद में मैं बोला अभी मैं नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि इधर मेरे को अभी और रहना है. हाँ सर. पर जब मैं आ रहा था तो मेरे पास में पैसा था अच्छा खासा, तो मैंने क्या किया, उधर से कैमरा लिया, फोन लिया, फिर मैंने मेरे डैड, अब मेरे Sir. डैड क्या टेलरिंग करते, तो मैंने उनके लिए क्या लिया, कैंची वगैरह लिया. कैंची. भाई के लिए मैंने वॉच वगैरह लिया. तो जब मेरे पास पैसा बचा था ना, तो मैं क्या किया, अभी वो कस्टम जो लेते हैं ना वहाँ पर, कहाँ पर, Yes, sir. बॉक्स भी. कैश अगर लेकर जा रहे होंगे ना आप लोग, तो उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं वो लोग. अगर आपके पास में कैश है ना अगर, तो वो कैश का आपको टैक्स भर के जाना पड़ेगा. ट्रांसफर करते नहीं आता कैश के सर ऊपर वैसे. टैक्स लगाते हैं वो लोग. ट्रांसफर कर सकते हैं, पर वो टैक्स लग के ट्रांसफर कर सकते हैं आप उधर से. ऐसा डायरेक्ट बैंक टू बैंक.